मॉर्निंग शुभंकर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? एकदम ठीक हूँ, बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक। तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं सर, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? थोड़ा दांत में काफी तकलीफ है। आज दांत का ऑपरेट करवाने जाना है। ऑपरेशन करना होगा, मतलब उठाना है क्या? आरसीटी करवाया था सर, वो आरसीटी में कैप शायद छोटा दे दिया, जिसके चलते इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो आज उसका होगा। दांत का दर्द, बहुत दर्द होता है। हम्म। दांत का दर्द बहुत होता है। अच्छा, ओके। तो सो the last class we discussed about this particular thing. हम क्या डिस्कस किए लास्ट क्लास? लास्ट क्लास सर हम लोग रिसेप्टर किए, गुड टारगेट किए। यस, मतलब व्हाट इज मतलब कौन से टारगेट को तुम ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोटीन, कोई भी किसी को भी तुम टारगेट नहीं बना सकते। There has to be certain conditions, certain criteria. वही यस अगर सर। फुलफिल हो तो ही तुम उसे टारगेट बना सकते हो। Now the thing is that टारगेट तो हमें मिल गई, तो उसके बाद हम स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन से ड्रग भी बना लिए, मॉलिक्यूल एकदम वहां पे फिट हो गई, तो दैट्स ऑल ओके। बट समटाइम्स दैट इज नॉट ऑल। व्हाई? बिकॉज as I've told you, there are two forms of drug designing, right? One is structure based drug designing that we know how to do, right? यस The सर। other is ligand based drug designing. और याद है ligand based drug design में we actually try to find out about this, or we try to analyze the virtual screening. Through virtual screening we try to find out the molecules which might bind to a particular target. So what is virtual screening? Now virtual screening simply means just a minute. Virtual screening means what? Virtual screening means that simply you are virtually using your protein as a target and then allowing it to, you are using the protein as a target, and that is a simply base, and you are simply bombarding that particular target with lakhs and lakhs of molecule to see which molecule is going to bind to it. और ये हम कब यूज कर सकते हैं? When you have a ligand library. There are several ligand libraries available, or you can develop your own library. Library मतलब, suppose you work in a company, the company makes this ligands, right? वो लोग तो ligand बनाते रहते हैं, they all make this particular ligand. Now whenever they develop and make that ligand, they store it in a particular data set, because it's not like that her library, her molecule, it's not that every molecule is going to is going to act like a medicine, right? Why? They develop molecule based upon the proper ADME criteria. स्विस एडीएम में जैसा जैसा है प्रॉपर फार्माकोकाइनेटिक्स, प्रॉपर ड्रग लाइकनेस पैरामीटर मिलके ही वो लोग लाइगैंड बनाते हैं। पर ऐसा नहीं कि सारे लाइगैंड, मतलब उनमें ड्रग्स होने की प्रोबेबिलिटी है, पर ड्रग्स होने की प्रोबेबिलिटी के लिए पहले तो मुझे जानना हो कि वो किस बीमारी में काम आ सकता है, राइट? सो फॉर दैट व्हाट हैपेंस, व्हेनेवर अ न्यू पर्टिकुलर टारगेट कम्स अप, सपोज जैसे कि अभी आ गया कि कोविड वायरस का स्पाइक प्रोटीन इज वन ऑफ द टारगेट, राइट? So now what people does, they simply take that particular COVID-19 spike protein as the target and they simply bombard that particular spike protein with lakhs and lakhs of molecule which were previously unused or which were previously used for some other medical conditions, to see if they can simply bind and inhibit spike protein. हो सकता है कि उनमें से कुछ अगर spike protein bind कर जाए और उसे inhibit कर ले, जैसे कि कुछ दिन पहले पिछले साल एक कोविड का ड्रग आया था, याद है? यस सर। People started buying it. क्या नाम था उसका? रामा। No, नहीं, not remdesivir, not that. HCG, याद है? सब लोग आके ले रहे थे, दवाई ले रहे थे, यार खा लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, क्या होगा, पर बाद में पता चला कि वो करता ही नहीं है. It doesn't inhibit spike protein. It has some other functions. So why? Because through computational approach you could see actually what drug binds to. अब ऐसा नहीं कि कोई भी ligand एक प्रोटीन पे बाइंड कर जाए, अगर बाइंड कर जाए तो ही वो ligand है, तो ही उसका एक मेडिसिन में बेनिफिट मिलेगा, ऐसा तो नहीं है. It has to bind to some proper points. जैसे कि तुम एग्जाम में कुछ भी लिख के आओ, क्या तुम्हें नंबर देंगे?
तुमने शायद 100 पेज लिख दिए, तो तुम्हें नंबर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम कहानी लिख के आ गए। जिसका जो आंसर है प्रॉपर आंसर लिखना होगा, तो वो तुम थोड़ा एक पेज में ही लिख दो प्रॉपर आंसर, तुम्हें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और 100 पेज की कहानी भी लिख दो तो नहीं मिल सकते। वैसे ही है कि ligand is not like that, if it binds to a protein it is going to work, no, it has to bind to a particular residues, it has to bind to a particular position, it has to bind to a particular area which is responsible for that particular function. अगर कोई एंजाइम है तो एंजाइम का फंक्शन कहाँ होता है? एक्टिव साइट में होता है। सो इफ यू आर डेवलपिंग एन इनहिबिटर, it has to bind to the active site, or it has to bind to somewhere, some place that can prevent the entry of the substrate to the active site. Then only that can act as a particular inhibitor. तो ऐसा क्या होता है कि जब एक नया मॉलिक्यूल मिल गई, तो rather than discovering a novel ligand, why it is problem for discovering a novel ligand? Because novel ligand बनाने में बहुत मेहनत लगती है. It takes a lot of intellect, it takes a lot of planning, it takes a lot of energy, it takes a lot of money to develop a new ड्रग कैंडिडेट। क्योंकि अगर एक नया ड्रग कैंडिडेट बनाओगे तो उससे तो पहले तुम्हें टेस्ट भी करना होगा, उसका ड्रग लाइकनेस पैरामीटर करनी होगी, उसकी क्लिनिकल ट्रायल करनी होगी, तब जाके तुम बोल सकते हो कि हाँ दिस मॉलिक्यूल इज वेरी गुड मॉलिक्यूल। 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ तुम्हें खर्च करनी पड़ेगी, तब वो जाके मॉलिक्यूल मार्केट पे आएगी। बट थ्रू वर्चुअल स्क्रीनिंग यू आर स्किपिंग ऑल दीज थिंग्स because you are using already determined medicines in the market or already developed ligand which have been tested for clinical. Now, some of them might have been tested for clinical trials, some of them might not have been tested for clinical trials. Okay. तो इसमें क्या होता है कि एक लाइब्रेरी ले लो, लाइब्रेरी में बहुत मॉलिक्यूल्स रहती हैं, जैसे कि 100 मॉलिक्यूल्स, 200 मॉलिक्यूल्स, 1000 मॉलिक्यूल्स, 10,000 मॉलिक्यूल्स, 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऐसा रहता है। तो टारगेट में तुम उससे बॉम्बार्ड कर दो, एंड थ्रू द यूज ऑफ डॉकिंग प्रोसीड्यूर्स इट इज गोइंग टू सी which ligand is binding to that particular domain. Now the ligand binding can actually be changed. तुम ऐसा कर सकते हो कि प्रोटीन पे कहाँ बाइंड कर रहा है, या फिर कोई फिक्स पोजीशन भी फिक्स कर सकते हो। So this is actually the virtual screening. Now why it is very good? Because through this you can screen lakhs and lakhs of molecules. With the help of this you can screen actually 1 lakh or 2 lakh molecules. That's a very good thing, because it's a very fast procedure, because to screen almost a lakh molecule it's going to take around. Now there are softwares which are paid softwares, and obviously the paid softwares work better, much more faster. And through paid softwares, if you use the paid softwares, obviously it's going to take around 4 to 5 days, maximum of 7 days to screen out 1 lakh molecules. That's really fast, right? Really fast. And second thing is that उससे होता क्या है, 1 लाख मॉलिक्यूल से तुम करो तो छान के उसमें से 10 या 5 मॉलिक्यूल तुम्हें देंगे कि अच्छा दिस मॉलिक्यूल कैन एक्चुअली एक्ट टू इट. How do they do it? Simply you take this particular molecule, you take the molecule, first have to do the literature study ki kaun sa protein ko le, you have to develop that particular molecule, you have to find out the target, and then you have to develop the ligands. Now the ligands can already be developed, or you can develop your own ligand using the QSAR model, and after that, or you can simply screen molecules from the libraries, large libraries of molecule liye, and then you have to simply filter it. Now how the filtering works? First of all, you're going to set up a cutoff. Key. First, I'm going to only select the ligand that can bind with high affinity. And what's the high affinity? Suppose 5 kD. It is actually binding to this particular ligand with very low kD, 1 micromole kD. 1 micromole kD या 5 micromole kD पे ही जो bind करेगा, उसके ऊपर किसी को नहीं लेंगे. So that is the first screening. So obviously among 1 lakh molecules, 50,000 molecules are going to get screened, because 50,000 molecules are not going to bind to it, and 50% are going to bind to it. Among 50% binding to it, some will be very low affinity binding, just ऐसे ही bind कर रहा है, very low affinity binding. So you're going to screen out those, और ऐसे screen करते 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 करते, you are only going to get a few molecules, a handful of molecules. How many? 5, 6, 7, 8, 9, less than 10 molecules, or at most 10 molecules. Now it actually depends upon you कि कितना molecule तुम select करोगे. But you want to select a very less molecule. Why? Because selecting just few molecules, अगर मुझे 5 molecule मिल गए कि देखना है ये 5 molecule इस टारगेट के साथ बढ़िया बाइंड कर रहा है, बहुत हाई एफिनिटी से बाइंड कर रहा है, सो वी टेक दैट 5 मॉलिक्यूल्स एंड वी गो फॉर इन विट्रो एंड इन विवो एसेस. थ्रू इन विट्रो एंड इन विवो एसे, व्हाट डू? वी ट्राई टू फाइंड आउट if it is, suppose it's an anti-cancer drug, okay, that you are trying to screen. So you take that 5 molecules and you have to see
the potential of that molecule to act as an anti-cancer effect on a cancer cell. तो कैंसर सेल पे हम वो मॉलिक्यूल को जाके ट्रीट करेंगे और देखेंगे कि इज इट एक्चुअली किलिंग द कैंसर सेल्स और नॉट. तो 5 में से देखा गया कि सपोज हम लोग देख पाएंगे कि एक या दो मॉलिक्यूल इज एबल टू किल द कैंसर सेल्स. The rest of them are binding to the protein with high affinity, but they are not able to inhibit that particular protein. Okay, but the Yes, sir. other two are actually binding to it with high affinity and is able to kill that particular cell, cancer cells. So in vivo assay successful, then we go in vitro assay successful, then we go for the in vivo assay where we use the mouse models, and sometimes people does not use mouse models. It depends upon the choice. So you mouse model पे क्या करते हैं? We induce tumors. You induce tumor into the particular mouse. And then you treat that particular mouse with the molecule to see if the tumor is shrinking. And if the tumor is shrinking, then you know that particular thing is working because it is able to shrink the tumor, a 3D tumor, not only killing cancer cells in the cell line, but in a particular mouse it is working. So that's how you confirm. Now sometimes you might find that yes, this particular molecule is having the anti-cancer activity, but let's see how to optimize it more, how to make it more specific to cancer cells. So that is the lead optimization. तो फर्स्ट हम लोग क्या किए, हिट टू लीड किए, यहाँ से हिट से लीड मॉलिक्यूल निकाले और लीड मॉलिक्यूल निकालने के बाद उसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी मोर. And after we increase the capacity, then again you have to perform the same assays to see whether the capacity has increased, and after that you publish the paper. So that's how the virtual screening actually works. Now the thing is that what does it do? When you use the virtual screening, how does it work? It's simply you have to find out the pharmacophore mapping. You have to map out the pharmacophore. You have to find out the areas or the chemistry or the functional groups that are, or the important pharmacophores that are related to that particular thing. जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने एक OH देख लिया, मतलब that can participate in hydrogen bond. So obviously if I add another CH3 and OH bond, okay. Now you know that OH hydrogen bond have a particular distance, right? What is the distance range in which hydrogen bond can work or form? कितने डिस्टेंस तक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम. 1.54 नॉट कितना, नहीं रेंज कितना? Till 3 angstrom. Okay, till 3 to 4 angstrom you can say the hydrogen bond is forming. Obviously the greater the distance, the less is the power. Okay, तो तुमने मैप करके देखा थ्रू पाइमॉल एंड ऑल, यू मैप करके देखा अच्छा इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, मतलब ओके इसको एक काम करते हैं, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस घटाएं. अब डिस्टेंस कैसे घटाएं? सो यू ऐड अ मिथाइल ग्रुप बिफोर इट. एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या होगा उसके नीचे, तो वो थोड़ा सा और आगे चला गया, डिस्टेंस घट गया, तो बॉन्डिंग और पावरफुल हो जाएगी. So this is how you map the pharmacophore and you try to find out to enhance the pharmacophoric effect. Okay, and after that you simply use to see whether the ligand, or to find out the ligand that's a much more better ligand. So this is how the virtual screening works, and that's why we do the virtual screening, so that we can get this particular molecules, because this is very efficient. Within 7 days or within 4 days you can screen a whole lot of library. You can screen out a lot of molecules and chemicals, and after you screen out and find out a lot of molecules, you can simply perform the experiments also, the in vitro and in vivo assays, to confirm your data. So this has saved a lot of time, because अगर virtual screen नहीं रहती तो क्या होता? You have to take all those, among those 1000 molecules, you actually have to use at least 100 molecules to screen. तो पहले स्क्रीनिंग कैसी होती थी? पहले स्क्रीनिंग होती थी कि ये इनविट्रो, डायरेक्ट इनविट्रो ऐसे से शुरू होती थी. अब देखो एक 5 मॉलिक्यूल का करना और 100 मॉलिक्यूल का करना कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है. बस टाइम ही नहीं, पैसे भी बहुत लगते हैं. यू हैव टू हैव दैट सेटअप, क्योंकि ऑब्वियसली अमंग 100 इट इज कंफर्म दैट 90 इज गोइंग टू गेट, मतलब उससे कुछ नहीं होने वाला है. But you require the reagents, you require the machine, you require the time, you require electricity, a whole बहुत time लग जाती थी. So this virtual screening has actually condensed the time. This is actually a time barrier. It has stopped the time barrier. Time barrier को उसने खत्म कर दिया, कि the time को बहुत short कर दिया. Okay. Now for this obviously there are few servers that are very good, but there are paid software. But yes, there are also some servers that are free software that can researcher use. Okay, so one of the server is actually MTI OpenStream.
So MTI OpenScreen is actually a server for structure-based virtual screening. So what is structure-based virtual screening? Structure-based virtual screening means now virtual screenings are two types. Okay. जैसे यहाँ पे देख सकते हो there are two type of structure-based virtual screening. One is ligand-based virtual screening, another is structure-based virtual screening. Now, with the knowledge till now, tell me the difference between two. The structure-based method means the structure which fits in which protein interaction fit with each other. And in ligand-based method, we have to find out the ligand देखो attached with the molecule. हाँ structure based मतलब the ligand that you are going to select will be specific for that molecule only, for Yes, that sir. target only, specific to that target, because that will be Yes. complementary to a particular part of the particular protein. Whereas ligand based method means you are using that ligand as the मेजर ऑब्जेक्ट, उस लाइगैंड के ऊपर ही हम क्या करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम लोग मॉलिक्यूल बनाएंगे ना. हाउ टू डेवलप स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट, there are various methods. By similarity searching, similarity searching means simply take a molecule and use उसी मॉलिक्यूल के ऊपर उसका एक रेप्लिका बनाओ और ढूंढो कि उसका रेप्लिका कौन कौन है. सिंपली लाइक फाइंडिंग अ क्लोन, सिंपली लाइक फाइंडिंग अ क्लोन. जैसे कि तुम्हारे, अब मुझे करना है कि तुम ऐसा देखते हो, अच्छा चलो तुम्हारे जैसा देखने में और कौन कौन है उसे ढूंढते हैं, फिर हम उसे यूज करेंगे. सिंपली लाइक दैट. ओके. नेक्स्ट है फार्माकोफोर मैपिंग. फार्माकोफोर मैपिंग मैंने जैसे तुम्हें बताया कि कहाँ पे क्या क्या प्रोजेक्ट है, क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है, सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हम वहां पे बैठाएंगे टू सी इफ इट कैन एनहांस दैट एक्टिविटी, राइट. And the third object is the machine learning method. In machine learning method, what this will do, you take the help of machine. You the machine, the computer helps you. It's an AI. It takes the help of the AI and simply helps you to get that particular idea to see if it is working or not. Okay. Now, in this particular case, the MTI OpenScreen is a structure-based virtual screening. So, what does it do? You have to upload a particular protein structure. Once you upload a particular protein structure, it's going to take that protein structure, scan the protein structure, and show you the entire thing. अच्छा, एक चीज, अच्छा मैं इसको बनाता हूँ. उसके पहले एक चीज मैं तुम्हें बता दूं. हाँ, ये वाला शायद. अच्छा, सोचिए मैंने जो जो टारगेट पहले बताया था कि ये टारगेट है तुम्हारा, ये दिस मॉलिक्यूल इज अ टारगेट, दिस मॉलिक्यूल इज योर टारगेट. So how do you confirm that that particular molecule is your target? On that particular target मतलब क्या, suppose मैं कह रहा हूँ कि suppose this particular protein X is responsible for cancer. Okay. So how do you prove it? Because before you can develop a medicine for protein X, you have to prove it, right? That protein X causes cancer. So how do you prove it? सोचो, थोड़ा सा सोचो, बताओ. क्या सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि तुमने सपोज एक प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया, that this particular protein, मतलब तुम तो टारगेट करोगे ना. टारगेट आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, you have to identify a particular target. Now once you have identified the particular target, you have to confirm it, right? मैं तो पूछ ही सकता हूँ कि यार यार तुम्हें कैसे पता कि ये प्रोटीन एक्स ही कैंसर कॉज करता है. You are developing a ligand for it, but how are you sure that this particular protein X causes cancer? आइडिया नहीं है सर. आइडिया नहीं है. ओके. देखो, तो मतलब तुम्हें क्वेश्चन को समझ पाए ना. हाँ, क्वेश्चन तो समझ गया मैं सर. मतलब बात है कि मैंने प्रोटीन को तो टारगेट को तो आइडेंटिफाई कर लिया, बट आई हैव टू वैलिडेट इट, बिकॉज अदरवाइज सपोज बाद में देखा गया कि तुम्हारा हाइपोथेसिस रॉन्ग था, तो क्या होगा, तुम उस प्रोटीन को तो टारगेट बना के ड्रग्स तो बना दोगे, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव बिकॉज दैट डज नॉट कॉज दैट पर्टिकुलर डिजीज, राइट.
So to do it, there are several things that you can do. The first is to see the genetic and proteomic changes. Now, what is genetic and proteomic change? Now, if I say that a particular protein, suppose VEGF, okay, VEGF is one of the protein that is seen to be overexpressed in cancer cell. In every cancer cell, VEGF is overexpressed, and it is one of the major protein. It's an oncogene, and it has been found that VEGF drives most of the cancer. Okay. Okay. अब confirm कैसे करें? The first confirmation is through to measure the changes at genetic and expression level and at transcriptome level. मतलब क्या करें? फर्स्ट उसको हम एनजीएस करेंगे, सीक्वेंसिंग करके देखेंगे कि उसका एक्सप्रेशन बढ़ता है या नहीं. पर सीक्वेंसिंग से तो एक्सप्रेशन नहीं पता चलेगा, उससे तो बस पता चलेगा कि उसमें कोई म्यूटेशन है या नहीं, राइट? सो द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज सीक्वेंस द एंटायर जीन टू सी इफ इट कैरीज एनी म्यूटेशन. और अगर कुछ म्यूटेशन मिला, then you have to see, you have to confirm through literature that is there any previous report that this mutation causes cancer. And if you find that yes, there are previous reports that this kind of mutation in this particular protein causes cancer, then it's good. In that तुम्हारा gene में भी वही mutation है, validate हो गया. And the next is the expression changes. Expression changes मतलब उसका मतलब healthy cell में एक healthy figure, healthy body जिसको suppose कोई वो cancer नहीं है, उसमें उस प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है. और एक डिजीज्ड पेशेंट, एक पेशेंट में जो कैंसर से जूझ रहा है, उसके अंदर उस प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है. नाउ ऑब्वियसली इफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, किसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी? तो इसको सर आरएनए से एनालिसिस से कर सकते हैं ना? हाँ, कंपेयर तो आरएनए से एनालिसिस से कर सकते हैं. नहीं, आरएनए से की जरूरत नहीं है. तुम प्रोटीन कैसे मेजर करते हो बताओ? टेल मी एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर प्रोटीन. पीसीआर से प्रोटीन? ना कम ऑन, बहुत इजी है. हाँ, क्रोमेटोग्राम. अरे वेस्टर्न ब्लॉट. हाँ, बस वेस्टर्न ब्लॉट से पता चल जाएगा, वेरी इजी. अब पीसीआर तुम बता दिए तो बोलो, पीसीआर से हम क्या पता कर पाएंगे? पीसीआर तो सिर्फ साइज पता कर पाएंगे. साइज? आरएनए का? हाँ, नहीं. पीसीआर से सर पहले तो एम्प्लीफाई करेंगे डीएनए मॉलिक्यूल को, आरएनए मॉलिक्यूल को. हाँ, तो साइज कैसे पता चलेंगे? पीसीआर से हम क्या कर सकते हैं? पीसीआर से हम उसकी आरएनए लेवल देख सकते हैं. उसकी आरएनए लेवल क्या है, कम है या ज्यादा है? यस सर. आरएनए की कंसेंट्रेशन, बिकॉज प्रोटीन इज मेड फ्रॉम आरएनए, राइट? तो यू हैव टू डू द पीसीआर टू चेक द आरएनए लेवल आल्सो, कि हाँ उसके अगर ज्यादा है तो आरएनए लेवल भी ज्यादा होगी, प्रोटीन लेवल भी ज्यादा होगी. सो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. एंड द अदर वे ऑफ डूइंग इट टू फॉर्म, simply delete that particular gene. If that particular gene is really causing the cancer, then deleting it is not going to cause cancer, right? So you can delete that particular gene by using siRNA and various methods, CRISPR-Cas9 and all. You can simply inhibit that particular gene. उसे तुम delete कर सकते हो. And once it is deleted, then you can use that particular protein और see कि हाँ delete हो जाने पर कैंसर स्टेट से ये सेल बाहर आ रहा है. Then that means that is a confirmed assay that this particular protein is responsible for that particular disease. Clear? Clear, sir. Okay. So these are the functions we need. Now when we delete a particular gene, what it is called? What is the scientific term? Delete. No, knocked out, knockout. Knockout, yes sir. Knockout, gene specific knockout. जीन नॉकआउट, एक जीन को वहां से हमने पूरा गायब कर दिया. अब देखो, अब हाँ, अब किस किस कंडीशन में हम जेनेटिक नॉकआउट नहीं बना पाएंगे ये बताओ. Now see, these are the questions that does not, मतलब तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है. These are very logical questions. थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा. मतलब इसका ऐसा नहीं कि कोई किताब में इसके आंसर मिलेगी, नहीं, सोच के बताना पड़ेगा.
When for which genes we can't use a knockout? जैसे ट्रांसपोर्टर जिनको एक जगह से नॉकआउट कर दिया, उसके बाद उसको मैपिंग की, हाँ कहीं से भी कोई ट्रांसपोर्टर जिनको नॉकआउट किया हाँ और एक में नॉकआउट ना किया हाँ और दोनों का कंपेयर किया। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि किस सपोज मतलब तुम तो कोई भी जीन की नॉकआउट बना सकते हो, राइट? यस सर। बट देयर आर फ्यू जीन्स फॉर विच यू कांट परफॉर्म अ नॉकआउट। ऐसी कौन सी केस में हम जेनेटिक नॉकआउट नहीं बना पाएंगे? द केस जहां पे वो जीन हमारा डे टू डे एक्टिविटी में लगता है। जैसे ग्रोथ में हो गया, मेटाबॉलिज्म में हो गया। यस, जैसे कि सपोज ग्लाइकोलिसिस में कोई एंजाइम लगा हुआ हो, उसे तुम नॉकआउट कर दो तो क्या होगा? इट विल बी लीथल। वो आदमी ही या फिर वो एनिमल, वो चूहा या वो सेल ही मर जाएगा। यस सर। दैट पर्टिकुलर क्लोन इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। और अगर वो सर्वाइव ही नहीं किया तो हम कहां से क्या देखेंगे, राइट? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। यस सर। So for few genes, it's not that you can perform it for any genes. Only the genes, जो जीन्स तुम्हारे इस जीन को क्या कहते हैं, जो जीन को नॉकआउट करने से इट बिकम्स लिथल टू द सेल, व्हाट इट इज कॉल्ड? It is called housekeeping genes. So for housekeeping genes, you can't use a knockout because that will simply kill that particular organism. Clear? क्लियर सर। इसलिए थोड़ा सा सोचो। Only it's the logical question. ये कोई पढ़ने की बात नहीं है। Okay. तो ये तो हम पिछले ही कर लिए थे। Okay. So now the thing is that what is the other reason for validating drug target? मतलब drug target तो हम validate कर दिया, but what is the other reason for validating? The first reason for validating, as I've already told you, to understand and obviously to know if that particular protein is working or not. And the other reason is that reproducibility and to introduce the variation to the ligand target environment. Now, what is reproducibility? Reproducibility मतलब कि तुम एक एक्सपेरिमेंट कर लिए, ठीक है? अब वही एक्सपेरिमेंट बाहर के लोग भी करेंगे और हर जगह वही रिजल्ट रिप्रोड्यूस होना चाहिए। यस, वही रिजल्ट हर जगह रिप्रोड्यूस होनी चाहिए। Because if that particular result is not reproduced, then that particular experiment has no meaning. People are going to say that it is not a proper experiment. You have done something wrong because I can't reproduce it. तो इसीलिए एक काम करके तुम्हें बार बार करना होगा, at least therefore at least 5 times, at least 3 times, and at most 5 times you should repeat an experiment. कोई भी experiment हो, you should repeat it at least 3 times to confirm that yes it is happening. Because हो सकता है कि पहला बार तुम्हारे साथ एरर हुआ हो कोई, and second to see the reproducibility, because if it is not reproducible you can't publish a paper. Yes sir. When you publish a paper, people are not going to use that particular paper. You have to reject it. Okay. Now the next step is to introduce variability in that particular environment. Now what is variability? Variability means suppose the cancer के बात कर लो. Okay. Now suppose I am working on breast cancer. Okay. Yes sir. Now breast cancer पे काम करने के लिए बहुत कुछ मॉडल होते हैं. What are the models? The cell lines are models. And what kind of cell lines? There are a variety of cell lines for breast cancer. There is MCF7, there is MDMB231, there is HeLa. So all these cell lines are breast cancer cell lines. Now suppose, now why they are different? Because they have been taken from different patient. The MDMB231 has been taken from a particular breast cancer patient. MCF7 has been taken from another breast cancer patient, and that particular
cell line is still used as a model system to study. Now suppose I have developed a drug against breast cancer, okay, Yes, sir. and I have done all my experiment in MCF7 cell line. पर MCF7 cell line और MDMB231 cell line तो अलग है. So is my drug working on MDMB231? Because there will be very, मतलब अगर हम breast cancer ले लें और अगर world population ले लें, so there will be few people who are going to have their cells similar to MCF7. There will be few who are going to have their cell specific or similar to MDMB231. There will be few who are going to have their cell like HeLa. But if my drug works only on MCF7 cell line, but it does not work on MDMB231 or HeLa cell, will it be a good drug? No, sir. It won't be a good drug. So that is why you have to see whether it is able to prevent cancer in all the 3 cell line or not. Now, sometimes doing this requires a lot more experimental things. Yes, होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा experiment करना पड़ता है तो थोड़ा सा problem हो जाता है. But it is always advisable to do it because that introduces the variations. Because all the cell lines are different, their genetic makeup are different, similar to our body. Every human is different. Every human's genetic makeup is different. So when you use a drug, you have to see whether it is acting on all possible targets or not. Yeah, once you see that yes, it is working in these 3 different cell lines, then the value of your work also goes up. Okay. So this is why you should always use different environment to see whether the drug is still working or not. Because according to the different because chemical, drugs are chemicals, right? And we are all different. So is it working on my body? Is it working on his body? Is it working on their body? If it is working on every kind of body in every kind of biophysical content, then obviously it's a good drug. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Very good. Okay. Now, generally, as I've told you that we use siRNA for genetic knockout or confirming the genetic knockout. But why siRNA? Why not CRISPR-Cas9? You know CRISPR-Cas9, right? Yes, sir. So why do we use siRNA but not CRISPR-Cas9? Because CRISPR-Cas9 is really tough to be done. बहुत मुश्किल है करना. It's really tough. Whereas siRNA is really easy. उसमें पैसे कम लगते हैं. उसमें काम बहुत जल्दी होता है. कोई भी कर सकता है. For CRISPR-Cas9 you require specialized person. But for siRNA you don't require specialized person. और उसकी कीमत भी बहुत कम है. बहुत कम कीमत है. So it requires a very little money and you can use it. And money is a real problem. कहीं भी जाओ, right? So that Yes, is why generally what we do, we use siRNA, and these are the advantages and disadvantages that you can simply see and read. Because in siRNA क्या होता है? You don't require the knowledge of protein. क्यों? Because it targets the RNA. It inhibits the RNA. तो प्रोटीन के लिए जो RNA बना वो RNA को inhibit कर देगा. It simply inhibits that particular RNA that you have, and once it inhibits the RNA, and obviously it is not going to work. क्योंकि RNA inhibit हो गया तो प्रोटीन क्या बन पाएगी? नहीं बनेगी. नहीं बनेगी प्रोटीन. So that is the reason. Okay. Okay. So now, okay. So MTI Autodoc, as I was telling, that MTI Autodoc has variety of things. So there are 2 things. First, you can perform a virtual screening protocol from MTI Inopesmin, and another is the MTI Autodoc. So in Autodoc, what it does, it simply uses the docking. एक ही प्रोटीन पे डॉक करके देख सकते हो कि हाँ तुम्हारा प्रोटीन कैसे लग रहा है, कि लाइगेंड कैसे बाइंड हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ऐसे. And it contains various diverse kind of libraries too that are embedded onto this particular thing. So क्या होता है? So this is how that entire thing works. There are 2 things as I've told you, Autodoc and OpenStream. So let's start with Autodoc. The first, what is docking? What is docking? Docking means comparing
two structure, two molecular structure fit together with each other. Comparing, not comparing. A study of how two molecule fit Interact. to each other. Yes, how two molecule interact with each other, right? So Yes, sir. that is the thing that we study through docking. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी देखना होगा. तो obviously to understand and see how two molecules are interacting, we require two molecule structure, right? Yes. So that is the first thing up here. So this is the protein. First we require to upload a protein structure. Now you can upload it the protein structure through mol2 format or through PDB format. There are two formats of protein molecule. You can upload Yes. it. So first you have uploaded the protein, and next, in the next segment, we have to upload the ligands. Now there are, in this Autodoc feature, you can upload at most 10 ligands. Okay, but the thing is that Yes. these ligands have to be protonated, and this molecule can be uploaded in two different formats, either in the mol2 format or in the SDF format. Okay, so after this protein and molecule have been uploaded, we go to the next segment. In the next segment, we study the docking. Now, again, there are two kinds of docking. How many? Two kinds of docking matlab? One is blind docking, another is binding site docking. Again, what is blind docking? नाम सुन के क्या लग रहा है? मेरा बिना कुछ बिना कोई नॉलेज के एकदम कर दिया गया. बिना कुछ देखे, बिना कुछ नॉलेज के. मतलब इन दिस एस्पेक्ट देखो, अब प्रोटीन जहां बाइंड करेगा, समटाइम्स वी डोंट नो कहां बाइंड करेगा, एट विच रेसिड्यू इज इट गोइंग टू बाइंड, कहां पे बाइंड करना चाहिए, because sometimes we don't have that information ki that what is the active site of the protein, which part of protein is required, हमें वो knowledge नहीं रहती है, right? So for that we go for blind docking. Blind docking means simply using that particular docking for the protein और ligand को छोड़ दिए, उसे हम बस छोड़ दिए कि यार तुम जहां लगना है तुम लग जाओ, बाकी हम देख लेते हैं. जहां लगना है तुम लग जाओ. नाउ जहां लगना है लग जाओ मतलब कि हो सकता है कि तुम जहां बाइंड कर रहे हो, that might not be a very good point, or that might be a very good point, because I have no idea कि कहां बाइंड करनी चाहिए, right? I have no idea कहां बाइंड करनी चाहिए. So wherever you bind, you bind. So that is the blind docking. You simply leave the protein and the ligand to find a optimal complementary position to bind, right? And the other thing is binding site docking. Binding site मतलब when you know, जब तुम्हें पता है कि इस एंजाइम की एक्टिव साइट यहीं पे है और इसी इनहिबिटर बनाने के लिए मुझे यहीं पे डॉकिंग करना होगा, then that is the binding site docking. When you know where to bind, you know the residues where to bind. Okay, so for that, obviously you have to select the residues, you have to set up the grid. Yeah, bind to this location, bind to this location, and all. So these are the things that we have to study. Okay, don't worry. And next, so finally it does the docking and gives you the visualization कि हाँ देखो ऐसे ऐसे docking हो रहा है, this is how the docking is happening and all. Okay, very good. Other is the open screen. Open screen मतलब यहाँ पे virtual screening करेंगे. Similarly, you have to upload the protein, and at most you can upload around 5,000 molecules. You can upload at most 5,000 molecules. Now you can upload 5,000 molecules yourself from your library, or you can simply select the libraries that are there. Now this particular server already houses a few library. मतलब कैसा? It has diverse library, it has IPPI library. Okay, now what are these libraries? These are libraries that contains all molecules selected to a particular agent. For example, the IPPI libraries for food drugs. So there are few drugs that are related to the food industry, right? So for that there is a library that is there. So all ligands that cater to that particular requirement are present in that particular library. Similarly, once you upload it, you give some time. They are going to do the virtual screening with Autodoc Vina, and then you give you the result. But now, so let's see how it works. Now, obviously, it's going to take some time to run. So first, as you open it up, let me send you the link. जैसे तुम लिंक पे क्लिक करो तो ये खुल जाएगी. So this is the MTI Autodoc and OpenDoc. Now यहाँ पे देखो, first this is the overview. In the overview you can find out the
how this MTI Autodoc and this works, what kind of algorithms are used. So here you can find out everything. See, the Lamarckian genetic algorithm is used. Here also the Lamarckian genetic algorithm is used, but कैसे use किया जाता है, what the training sets, everything is actually written down here. यहाँ पे ठीक है, all the features and everything is written down here. What kind of libraries, food libraries, drugs libraries that we have been developing and all. What are the limitation for this particular thing, and everything यहाँ पे दिया हुआ है. Okay, so you can simply give it a read so that you know the basic principle of how the algorithm actually works. Okay, and to run the MTI Autodoc, simply click on this particular run MTI Autodoc. Okay. Now here, what you can do is, let me do one thing. Okay, यहाँ देखो. तो फर्स्ट MTI Autodoc हमने ओपन किया. तो यहाँ पे क्या है, पहला यहाँ पे है कि पहले ऐसे लाइगेंड को अपलोड करना है. फर्स्ट थिंग इज द लाइगेंड फॉर्मेट. यू कैन आइदर अपलोड इट टू mol2 और द SDF जैसे कि देखा गया था. तो फर्स्ट सपोज आई हैव mol2 फॉर्मेट, तो mol2, अगर ये था SDF तो SDF, and after that simply click on this upload molecule. Okay, in upload molecule what you can do, you can simply go and choose the molecule that you have developed. जो molecule तुम choose करोगे वो molecule यहाँ से click कर देना, upload कर देना. That molecule is going to upload it. Next, you see the receptor. The receptor is the protein molecule. Okay, and the receptor generally should be uploaded in PDB format, but you have it in mol2 format, then you can upload it in mol2 format. Doesn't matter. Okay, then the same thing. You can simply click on this upload button and then simply upload the molecule, the protein molecule. And after it has been uploaded, all you have to do is click on run. That's all. That's all. That's all you are going to say. That यहाँ run हो गया. It's going to start run. This is the Autodoc. Okay. This is the Autodoc. So I've already used the docking. So यहाँ पे there are 5 procedures how it does. So see, the first I have already started it, one of the job. So first procedure is splitting the ligand file. Now here you can also see that there are some demonstration mode is available where they use 140 PDB entry with 10 ligands. Okay, if it is selected yes, and then if you click run, it's going to give you the demo mode. कि कैसे होता है? I have already started the demo mode to give you the example. तो पहला क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट इज स्प्लिटिंग लाइगैंड फाइल. जो लाइगैंड फाइल दे रहे हो उसे स्प्लिट करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय स्प्लिटिंग? Splitting means to break down. हाँ, बट क्यों? व्हाई ब्रेक डाउन लाइगैंड? ब्रेक डाउन टू व्हाट? सोचो, मैंने बताया था. मैंने बताया था ना कि फार्माकोफोरिक मॉलिक्यूल्स होती है. देयर आर फार्माकोफोर्स, different pharmacophores. Yes, sir. So it breaks it down to see the pharmacophores. कौन सा functional group, to simply understand the functional group. It simply splits the ligand to set up that functional groups. कि इसकी इतनी इतनी ये functional group है, मतलब ये यहाँ 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 bind कर सकती है. Okay, that's how they split up, because it becomes easier for them to analyze where it is binding. So that is the first step, splits up the ligand file. Next, they set up the grid. What is setting up grid? Setting up of grid means it simply, since I'm using the blind docking mode, then I have to select the entire protein structure as a ligand binding domain. Then if it is setting up the entire thing as a ligand binding domain, so that is that particular thing कि हाँ, it is वो grid generate करते हैं. Now how to generate grid and all. अच्छा, तुमने Chimera install कर लिया था ना? Chimera इंस्टॉल कर लिए थे ना? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. हमारा जो भी डॉकिंग वॉकिंग है हम सब Chimera में करेंगे. ओके ओके, एंड दैट विल बी द नेक्स्ट डे. तो वहां पे हम देखेंगे कि ग्रिड कैसे जनरेट करते हैं. तो ग्रिड जनरेट किया जाता है. दैट्स द ग्रिड जनरेशन. एंड आफ्टर दैट दे प्रिपेयर, द थर्ड स्टेप इज प्रिपेयरिंग द लाइगैंड फाइल.
कि ligand फाइल जो है प्रिपेयर हो गया, and next is the preparation of receptor file. Right, once the ligand and receptor both are prepared, what does it do? It simply starts the open docking program. कि dock शुरू हो गया. अब once the docking is done, they're going to give you the show you the result. Okay, so that's how that particular thing works. Now let's look at वहाँ पे run हो रही है तो होने दो, तब तक हम लोग open screen वाला देख लेते हैं. Okay, so in open screen, see what happens here. The thing is that वहां पे तो बस तुम 10 मॉलिक्यूल अपलोड कर पाए. ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें प्रोटीन रिसेप्टर पहले अपलोड करने होगी. द प्रोटीन रिसेप्टर इज अपलोडिंग. नाउ द रिसेप्टर, दैट मींस यहाँ पे फिर सेम प्रोटीन यू हैव टू अपलोड इट. नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ओपन स्क्रीन एंड ऑटोडॉक? What is the major difference between MTI Autodoc and MTI OpenScreen? इन दो प्रोग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक में तुम बस 10 लाइगैंड ही देख सकते हो, यहाँ पे तुम एटमोस्ट 5000, यहाँ पे तुम एक बहुत ज्यादा लाइगैंड स्क्रीन कर सकते हो. ओके, दैट इज द मेजर डिफरेंस. तो यहाँ पे सपोज देखो, पहले तो पीडीबी प्रोटीन अपलोड कर लिए. नाउ यू हैव टू कम डाउन. Now you have to come down and you have to select the library. So if it is a, suppose I want to select the libraries from drug, so there are various libraries: IPPI library, diverse library, drugs library, food library, nanoparticle library. Suppose I want to find out the, because this is a drug molecule, I'm developing a molecule for therapeutic benefit, I will obviously select the drugs library. So drugs library select कर लिया, मतलब all the molecules present in drugs library will be screened for this particular molecule against this particular target. Clear? clear, sir. Now, or what you can do, or you can develop your own library. You can develop, suppose you are medicinal chemist and all you do is develop ligands and all, then you have your own set of library, then you can simply upload it. जैसे कि various company में होती है, company में लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद अपनी मेडिसिन की दवाई बनाते हैं and they have a library for that, and that library is a huge library, but they keep it private so they can use that particular library to do it. But the most important segment is this particular, the filters. Now what is filter? The filter means, देखो अगर हम लाइब्रेरी से या फिर डेटाबेस से लाइगेंड ले तो वहां पे तो बहुत लाइगेंड होगी, राइट? Yes, sir. पर हमें तो सब लाइगेंड नहीं चाहिए. We only require ligands that will cater to my need, like so these are the filters that will allow you to narrow down your search. अगर 1 लाख है, मैं 1 लाख मॉलिक्यूल लेके क्या करूं यार? मुझे तो बस कुछ ही मॉलिक्यूल चाहिए जिसकी क्राइटेरिया मेरे से मैच करती हो. तो क्या क्या क्राइटेरिया? सो क्राइटेरिया देख पा रहे हो, याद आ रहा है ये सब क्राइटेरिया? टोटली याद है सर. क्या है ये सब क्राइटेरिया? ड्रग लाइकनेस पैरामीटर है ना, ड्रग लाइकनेस. सो दिस इज द ड्रग लाइकनेस पैरामीटर कि तुम्हें कैसा मॉलिक्यूल चाहिए. नाउ डू आई वांट अ मॉलिक्यूल लाइक अ लीड मॉलिक्यूल? यस, ऑब्वियसली आई वांट अ मॉलिक्यूल लाइक माय लीड मॉलिक्यूल. और तुम्हारे मॉलिक्यूल में अगर तुम प्रोटीन स्ट्रक्चर फर्स्ट एनालाइज कर लिए तो तुम देखो कि वहां पे बहुत हाइड्रोजन बन सकती है. सपोज 5 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकती है. सो ऑब्वियसली अगर बन सकती है 5 हाइड्रोजन बॉन्ड, देन आई विल ऑब्वियसली वांट माय ligand to have formed at least 5 hydrogen bond. So I will write down 5 here. अगर मुझे चाहिए कि हाँ ये तो बस दो ही रखनी चाहिए तो मैं 2 रख दिया. तुम्हारी log p वैल्यू क्या चाहिए तुम्हें? क्योंकि कुछ लाइगेंड्स तो होगी जिसकी log p वैल्यू मोर देन 5.6 है, 8-10 है. बट शुड आई वेस्ट माई टाइम स्क्रीनिंग दैट? नो, because below 5 log p value doesn't mean कि वो एक अच्छा ligand बने. So you can set up the filters also. कि ऐसे ऐसे तुम filter setup करते गए ताकि जो molecules already तुम एक screening filter डाल दो. Only the molecules that cater to this particular characteristics will get screened, ताकि समय और कम लगे. क्लियर? ताकि समय और कम लगे और तुम इसे और भी
बेहतरी से यूज कर सकते हो. सो दिस इज द व्हाई और दिस इज हाउ यू डेवलप और फिल्टर्स, ऐड द filters to narrow down the search. So next is the grid calculation. Now what is the grid calculation? Now grid calculation are two types. First of all, you can either set up the parameters or you can set up the list of residues. Now if I know that which residue should my ligand bind to, then I will obviously set up the list of residues, right? कि मेरे ligand में मतलब मेरे प्रोटीन के यहाँ पे 23rd alanine, 57th tryptophan, 48 lysine, इसी में तुम्हें बाइंड करना होगा. So I am going to set up the residues so that the ligand can bind to those specific residues only, because I know that यही residues के वजह से ये problem हो रही है. So that particular residue is the binding site, so I want my ligand to bind to that binding site. Or you can develop set up the grid. What is grid? Grid setup मतलब you can set up a specific area. कभी कभार होता है क्या कि हमें पता नहीं चलती है कि कहाँ बाइंड करना है, कहाँ बाइंड करा दे. सो यू सेटअप ए एरिया कि आई वांट टू, यहाँ पे जितनी भी एरिया है आई वांट द लाइगैंड टू बाइंड टू दिस स्पेसिफिक एरिया. जैसे कि सपोज तुम्हारा बॉडी है, हो सकता है कि मुझे पता है कि यार तुम्हारे मुंह पे मारना है, तो तुम्हारे मुंह पे मारना है तो मैं लोग को कह सकता है यार मुंह पे मार दे. अब मुंह पे कहाँ मारना है, अब स्पेसिफिकली मैं बता सकता हूँ कि हाँ नाक पे ही मारो, तो दैट इज द रेसिड्यू कि नाक पे ही मारो. और अगर मुझे नहीं पता है कि यार नाक पे मारना है या फिर गाल पे मारना है, तो मैं क्या सेटअप कर दूंगा, तो कहूंगा कि यार मुंह पे मार. ठीक है, मुंह पे मार. क्योंकि अब कंप्यूटर इसकी एआई वर्जन दे आर गोइंग टू स्टार्ट एनालाइजिंग और उन्हें लगेगा कि कहाँ मारना है देख लेते हैं एंड वहां से वहीं पे वो लोग बेस्ट पॉसिबल लोकेशन पे जाके मारेंगे. क्लियर? Yes, sir. Clear. सो दिस इज दैट पर्टिकुलर थिंग. और यहाँ पे अगर तुम रेसिड्यू सिलेक्ट कर दिए तो रेसिड्यू कैसे देना होगा, सो दिस इज हाउ द रेसिड्यू शुड बी एडेड. जैसे कि ए इज द चेन लेंथ, चेन नेम. प्रोटीन में कभी कभी मल्टीपल चेन्स होती है, राइट? जैसे चेन ए, चेन, जैसे हीमोग्लोबिन की कितनी चेन है, कितनी चेन है हीमोग्लोबिन की? 4 ABCD. मैं यहाँ पे बस अगर फिनाइल एलानिन लिख दिया, बस लाइसिन 13 लिख दिया. अब हो सकता है तो वो चेन ए में भी लाइसिन 13 हो, चेन सी में भी लाइसिन 13 हो, राइट? तो कहां बाइंड करें, तो इसलिए हैव टू स्पेसिफाई द चेन नंबर. सो फर्स्ट यू हैव टू गिव द चेन. हाउ टू राइट इट डाउन? अंडरस्कोर ए इज द चेन नंबर. जैसे ए अंडरस्कोर ए इज द चेन नंबर. अगर तुम्हारा प्रोटीन के बी चेन में लगना है तो ए विल बी रिप्लेस्ड बाय बी. ओके. Then the residue in 3-letter code, amino acid in 3-letter code. What is this amino acid? PHE? Phenylalanine. Phenylalanine. What is TRP? What is TRP? Tryptophan. Very good. तो ऐसे ही 3-letter कोड में अमाइनो एसिड का नंबर लिखना होगा और उसके बाद अंडरस्कोर देके फिर उसका नंबर, कौन से फिनाइललानीन, द 919th फिनाइललानीन, द 37th फिनाइललानीन, ऐसे यहाँ पे लिख देना होगा. So you have to simply click on run. It's going to start. But remember, this is going to take a very long time. Okay? Since this is going to screen a lot of more molecules, it's going to take a long time. Okay. तो अब हम ऑटोडॉक पे वापस आ जाते हैं. तो यहाँ पे देखो जॉब खत्म हो गई. ठीक है. फिर यहाँ पे रिजल्ट कैसे देते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज गोइंग टू गिव यू दिस पर्टिकुलर थिंग, द एनर्जी. तो ये लाइगैंड है एंड दिस इज द तुम्हारा मॉलिक्यूल की लाइगैंड पोज है, फाइंड कर दिया मॉल2 फॉर्मेट में. And this is the best molecule. Why? Because it is binding with energy of minus 5.9 kilocalorie per mole. And we know the lower the energy, the more better the binding, right? So it is arranged by the binding potential. It is arranged by the binding potential. तो जैसे जैसे नीचे घटता जा रहा है, बाइंडिंग पोटेंशियल घटता जा रहा है ना? ओके, बट अरे कैसे लग रहा है, मुझे कैसे पता कि कैसे लग रहा है? So for that you have the pose viewer over here. So see, this is the protein, okay, and this is the ligand. So this is ligand 10. देखो लगा हुआ लिखा हुआ है ligand 10, ln10. यहाँ पे बेस्ट कौन सा था? ln1, राइट? ln10 का कितना था? -5.2, राइट?
तो मतलब बेस्ट मॉलिक्यूल ये नहीं है, ये लाइगेंड 10 है, बेस्ट मॉलिक्यूल है हमारा लाइगेंड 1, ये वाला है बेस्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले एक एक करके ही देखते हैं। तो क्या है, तो फर्स्ट यहाँ पे तुम देख पाओगे कि यहाँ पे तो लाइगेंड कैसे लगा हुआ है। तो ये है प्रोटीन और ये है देखो तुम्हारा ये लाइगेंड जो लगा हुआ है। और इसको तुम चेंज भी कर सकते हैं, यू कैन चेंज द प्रोटीन स्टाइल टू बॉल एंड स्टिक, you can change it to line trace, smooth line trace, but it is always better to keep it in cartoon because इसी से सबसे अच्छा फर्क पता चलता है। ठीक है, for example see this is the alpha helix, ये जो गोल 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 है, this is the alpha helix that I can state from this particular structure, this is the alpha helix। तो यहाँ से प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दिस इज द लाइगैंड। अब लाइगैंड को भी तुम लाइन से देख सकते हो, बॉल एंड स्टिक से देख सकते हो, इसे भी देख सकते हो। Suppose once this is ligand 10, so what's the ligand 9? वो ligand 9 कहाँ पे bind कर रहा है? See the position of ligand 9 has changed. The ligand 9 is actually binding to this particular method. ये यहाँ पे bind कर रहा है. It is actually binding to this particular region over here. Okay? What about ligand 8? Now see, it is binding to other region. अब देखो, in this particular case we have selected a blind docking method. मतलब we have asked the computer to find out the best possible region for the ligand to go and bind. Okay, so it has done it. तो इसलिए तरह तरह की ligand डिफरेंट जगह पे, बेस्ट जगह पे बाइंड करी जहां पर वो बाइंड करना चाहते हैं। So this is how the entire structure, see the structure of the molecule is changing. और यहाँ पे pose है ना, molecule की pose. What is molecule pose? The molecule pose means how the molecule structure changes, because in 2D structure जब हम लोग ligand बनाते हैं तो क्या हम लोग ligand तोड़ मोड़ के बनाते हैं? We make a very stable ligand, but bond तो आपस में हिल सकती है, right? It can assume any angle. तो यही एंगल देखो यहाँ से इसलिए तोड़ फोड़ के ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होके बाइंड कर रहा है। So that means this is how this molecule is binding to this particular thing. And once you know this, you can simply then use this information to do it. But obviously यहाँ से ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। So for that we require another software, PyMol, to make more clear visualization. Okay? Yes, sir. So next day we're going to start the use of PyMol, learn PyMol कि PyMol कैसे यूज करते हैं, कैसे करते हैं। बट उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, हाउ टू, अगर प्रोटीन स्ट्रक्चर है तो है, अगर है तो कहां से लाना होगा, ये जानना होगा, और अगर नहीं है तो मॉडल करना होगा, राइट? So to learn about the protein modeling too. Clear? Okay. Yes. Very good. Okay. Modeling. Okay. Yes, ठीक है, चलो. Okay, sir. Okay, okay, okay. Thank you, sir. Sure, Pranam. sure. एकदम एकदम. Bye. प्रणाम सर। एकदम एकदम, कोई बात नहीं, अरे प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो, बस उतना ही काफी है। यस सर। बस अपने मम्मी पापा को और भगवान को प्रणाम करना, और किसी को नहीं।